Hello, respected sir. Technically speaking. यो बैक किक करो होगा। इस पर हे अदिति यू।
Thank you so much, sir. Before inviting Sri Rajesh Singhal sir to cover with great knowledge and expert insight on this issue, I would like to share a brief introduction about sir with you all. Sir is an attorney that was you. He is very much you know with the police research and saying, yeah. Interface government is a problem. Now, Worthy Vice Chancellor, Professor Garg, learned Pro Vice Chancellor, Professor Janan, very learned Director of Legal Studies, Mr. Goel, other dignitaries, deans, professors, and students of law. It is very encouraging to see and to greet you all today. Now, let me see how many of you have or prefer a walk in the morning. Just raise your hands. Yes, quite a good number. Good. So you are going to find it easy as I walk through income tax, because walking is an exercise must be appreciated. And those who have not raised their hands, I appreciate what a nice sleep you might be having at that hour. But please do not sleep while my talk is on, because some of the important inputs I'm going to give you to the Income Tax Act 1961. Today, the Income Tax Act 1961 is a national disgrace. Professor Garg wanted me to comment on something, and this is the opinion I hold about the Income Tax Act 1961. Why I say so? Because there is no act under Indian jurisprudence where in the 64 odd years that it has been in practice, at least 5,400 mutilations have already been done. कौन सा एक्ट ऐसा होगा, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी और whatever you name it, Indian Property Act, Contract Act, whatever, कोई सा भी एक्ट आपको इस देश में ऐसा नहीं मिलेगा जिसके 50, 60, 70 साल में 5,500 के करीब amendments, additions, deletions हुए हों. And that is why I call it a national disgrace. In India, what do you think, which crop is the most fertile? Can anybody answer me? Wheat. Any other opinion? Rice, okay. What else? Good, good. Applause for them. What is most fertile in India is legislation. You name it and we have it. The very next day or maybe in the next fortnight, it will be proposed in one form or the other, be it a private bill, be it a government bill, or be it a finance bill, whichever bill, but it will come. What really astounds us is the follow-up to that bill. You know, our MPs do not discuss, do not debate the bills anymore. Gone are the days when they were used to be debating and studying things
and then doing the needful. But unfortunately, as the society has turned today, they do not discuss or do not consider it worth debating at all. What the debate is, things other than the legislation part. And this is precisely why you have actually sent them to Parliament to sit on and see the KGT of the logistics of the law that is to be. This is unfortunate, but that is how it is. It's quite true. We mistake amendment for improvement. By each amendment, we say we have improved this, that, and whatever. But we are also mistaken that each amendment does not mean there is an improvement. It could be the other way around also. Because what baffles me is today we are a country of 1.4 billion people. And shamelessly, we are just 6 crores of us paying taxes. What are the rest doing? Are they starving? Do they not have money? Are they not running around with cars and huge hotels and restful things in their life? They are. But somehow they are getting away with not paying taxes. And this is precisely the predicament of each finance minister. He or she has a big challenge each year to cover up for those who are not there. Now, though I will come to that a bit later, but the reference about TDS, taxes which are deducted at source, यानी जहां पर आमदनी अर्न होती है उस पर वहीं के वहीं TDS कहा जाता है कि कर लिया जाए. तो उससे क्या होगा, आप टैक्स दें ना दें लेकिन आपके नाम पर TDS कट जाता है. So that is one way of the government encouraging the payment of taxes directly. It has come a long way now because it was almost 17 years ago when we first proposed TDS, but not anymore. It is graduating by the day and things are coming under its scope. Unfortunately, section 11 and 13, they are what the trusts and societies are for. They give exemption to the trust, like the trust you have here or the society, whatever it may be here. They don't pay taxes. They earn incomes, but since education is taken to be a fundamental right, they do not consider it to be paying taxes, and they are given exemptions. But unfortunately, these two simple sections also have been mutilated no less than 85 times. Each year, अगर आपको किसी को exemption देना है तो once for all आप दे दीजिए, ठीक है, नहीं देना है उसको टैक्स, ठीक है, लेकिन घड़ी घड़ी आप उसको हर साल टिंकर करते हैं, हर साल उसमें कहीं फुल स्टॉप लगाते हैं, कहीं कॉमा लगाते हैं, कहीं इफ एंड बट लगाते हैं, notwithstanding anything, blah blah blah, all these things they keep on going on. That is where the challenge lies. As our learned director pointed out, India has 2 stages of taxation. One is called the direct taxation, the other is the indirect taxation. Now, yes, the girl there in the center, yes, please. Can you tell me what an indirect tax is? Come on, try. Or in the alternative, tell me what a direct tax is. Probably you were not attentive when Mr. Goel was speaking. सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट टैक्स उसको कहते हैं जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता है. जैसे आप, व्हाट इज इनकम टैक्स? इट इज टैक्स ऑन इनकम. नाउ इफ यू हैव एन इनकम, इट वुड बी टैक्स डायरेक्टली ऑन यू. वेयरएज आप टूथब्रश खरीदते हैं, उस पर जीएसटी लगता है, ट्रेड टैक्स लगता है, व्हाटएवर, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज वो सभी के लिए अक्रॉस द बोर्ड यदि कोई परचेज करने जाता है टूथब्रश तो उस पर टैक्स लगेगा. दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. The excise, the customs, all these things, they come under the shadow of indirect taxes. And income tax, as it is, comes under direct taxes because it affects you directly.
The problem again is, what is income? Can anybody tell me what all could be income? Come up with your ideas. I know you might not be knowing the act, but I'm there for your assistance. Come up with something. Think over. What could be income? जी, वो तो बात की बात है. आमदनी किसको बोलेंगे आप? What is income? खर्चा निकालेंगे नहीं निकालेंगे वो आपको एक्ट में मिलेगा या नहीं मिलेगा, it's another issue. Right now we are on the point whether what is income in your hands. Whichever form. To invite a direct taxation such as income tax, what would be receipt in your hand as income? Ji. Okay. Yes, you also wanted? Yeah. Okay, very nice. Anybody else? See, income is, both of these students have answered very well. I appreciate. The problem is that sometimes we coincide with what a receipt in our hands is. Not every receipt can be income in your hands. Supposingly, I was just passing by on the road and I had 5 lakhs with me, and I thought I would return in time from Dehradun. But then there were some developments which forced me to consider that it might be too late in the night and it would be difficult and unsafe for me to carry those 5 lakhs. So I dropped in to your Vice Chancellor and requested him, being a friend, to keep those 5 lakhs with him. Now he has received those 5 lakhs. What is the nomenclature you would give to this amount? Is it income in his hands? Why? Yes, true. I did not say he will return. I just put that money with him. Exactly. There you are. It is not his earning. I just placed that money with him as a matter of trust. It is, in other words, can be called money kept in trust with our worthy Vice Chancellor. Of course, I would get it back tomorrow, day after, whatever. Supposing I don't come for 15 days, that money lies with him, and the taxman knocks on his doors. What is he going to do? They would say, these 5 lakhs are yours. This is your income. So pay tax. Would that situation come? It would come. It would come. He would say that money was given by Mr. Singhal while he was passing, and any day it would have to be given back by me. It was only kept as money in trust with me. And then they would ratify it from me. If I say, yes, it so happened, he would be absolved. Else, he would be taxed. क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का एक और प्रमुख नियम है कि जो चीज जिसके पास पाई जाती है वो उसी की ट्रीट की जाती है जब तक उसका एक्सप्लेनेशन अदरवाइज सही ना पाया जाए. आपने अखबारों में सुना होगा ईडी की रेड, इनकम टैक्स की रेड, सर्वेज, ये सब जो भी होते हैं, these are all negative measures, as I would say, but they are mandatory to be done when people do not come with their own declarations. These are the things that happen that visit them, and once they visit them, the basic premise that whatever was found, even if it is a piece of paper giving details about some transactions or some documents which may or may not belong to you, they could be called Benami also. Have you guys read Benami Act? Okay, then you would be understanding it well. So all these things, once they are in place, they can be challenged, and the precondition is that whatever is found in your pocket, in your control, in your home, in your table, in your office, would essentially considered as belonging to you unless proved otherwise. Am I clear?
Now the problem is that if we go ahead with the concept of income, what all could be income? The Income Tax Act defines it, but in an inclusive definition. Section 2, subclause 24 tells us income includes. Now, what does it include? There are about 20 such items prescribed therein, but they are not exhaustive. Had they been exhaustive, the government of India would have placed a full stop somewhere or the other. But they say income includes, which means even after those 20 limbs, there could be a 21st one, 22nd one, and so on, depending upon the nature and circumstances as the case may be. So there is a law which itself in itself is not clear about what all could be your income. Therefore, you have to tread very cautiously as to determining anybody's income as to what is income. Like I gave you one example where money was kept in trust. There could be another example where my father was going around, he had some spare money and he donated me 1 lakh. Now, whether that could be my income. Supposingly, Mr. Goel gifts me 1 lakh as a gift. Will it also have the same treatment? Beg your pardon? No, in either case, in the first case also, I got 1 lakh. In the second case also, I got 1 lakh. So receipt is of 1 lakh each. That means I have 2 lakhs to explain in my hands whether it is income or not. Fine. Now there is a difference. The first one was given to me by my father, who happens to be my blood relation. Therefore, that gift would not be liable to tax. Though it is my income, but it will be exempt from tax since I got it from my blood relations. Likewise, my son or my Tauji or my Mamaji and so on, all those categories which are under the category of blood relatives. All those people giving me amounts would be exempt. Now, supposingly one gets married. No, any amount. In the second case, 50,000 is the maximum limit I can receive from Mr. Goel. The other 50,000 would be taxable because he was not my blood relation. Now, we have a customary system. Well, that is another issue. It doesn't relate to me as such. I'm talking of my incomes as such. Wherever the money comes from him, will be explaining himself. Right. This is headache. Now, you know, we keep going to weddings and marriages, and there is a customary system of handing over some gift in kind or some envelope carrying some money and so on. What will be the status? It is also a gift. Are you agreeing it will also be a gift? Right? So if it is a gift, what will be the status of its taxability? It will be anything else? Someone would like to tell me? Just imagine. Income tax is nothing but pure and simple imagination. Whatever can happen on a logic basis is within the act. Whatever seems illogical will not be in the act. You mean to say, supposedly 75,000 is the total receipts in the entire marriage function. 50,000 would be exempt. Yes. But in my hands, it is the same thing. I received 75,000 on account of my daughter's wedding or even my own wedding, whatever.
You have to pay. That's another issue. That is part of your expenditure. That is part of your expenditure. I'll come a bit later to you are very worried about the expenditure part. I'll make it clear, but a bit later. So whatever is the situation, can anybody guide me? अगर मेरे बेटे की शादी है तो उसमें स्त्रीधन कैसे हुआ? एक बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसकी बेटे की शादी होती है और वो कुछ को गिफ्ट देता है, दैट कैन बी टर्म्ड स्त्रीधन, बट नॉट अदरवाइज. मैं तो एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं. वेडिंग में आप गए, रिश्तेदारी की है, वो यारी दोस्ती की है, जैसे भी है, आप वेडिंग में गए. नाउ आपने एक लिफाफा दिया 1100 का, ऐसे ही 50 लोगों ने और दिया 1100 का. नहीं, don't confuse. I'll come to that. I'll clarify you that all those things. The bigger and the brighter question is कि किसी भी एक ऑर्डिनरी वेडिंग में लिफाफे जो आए विजिटर्स के, वो रिलेटिव्स के भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स के भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा फ्रेंड्स के भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा फैमिली अरेंजमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दोस गिफ्ट्स? Up to 50,000, it would be tax free. Okay. Standard deduction is you are referring to section 17. That comes for a salaried person. I'll come to that a bit later. Right now, I'm just taking you through the basics of income tax, which visit you daily. Because otherwise you might not, being students, you might not be very familiar with the things that I'm going to explain a bit later. Right? So, but it's good you attempted, though it's not correct. Anybody else from this side? The last bench, anyone? No idea what we are discussing? बोलिए, आप लोग शर्माइए नहीं. I am there to help you. जी. Whichever way and form you do it, given to the girl, given to the boy, given to their parents, whatever. They are all in the one circle. गिफ्ट्स जो भी आई 50,000, 60,000, 70,000, उनका क्या स्टेटस होगा? I just told this little girl that that answer is not correct. Yes. Very rightly interpreted, but the point is we are not discussing gifts from one to another. We are considering gifting of collective number of people, giving it to so many people. Right? Now let me clear it. हर लॉ में कुछ ना कुछ कस्टमरी चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है. Indian way of life में much of it comes from Australia and Canada. Our basic income tax footing as matched with Australia and Canada. What Revenue Canada does, part of it is within income tax act. Over there, they do not have this kind of a culture, therefore they do not appreciate this in the act. But in India, we always have a culture, whether it be a Christian marriage, it be a Hindu marriage, it be a Muslim marriage, whatever marriage. But if it is a marriage and people give some blessings in the form of donations, those donations are considered exempt in totality, whether they come from blood relations or otherwise. Right? Now there is a rider to it.
The rider is, supposingly there is a rickshaw puller who spends, he has no status, his only asset is that rickshaw that he owns, and he does his daily wage work. Now he spends 3,000 for his daughter's wedding, and you advise him to show 1 lakh because Mr. Singhal told you that the wedding expenses or wedding receipts are exempt. Will that be exempt? Yes. You wanted to say something? Anybody else? आपको जैसा मैडम खर्चे के लिए कहती थी कि मुझे उसकी प्रोपोर्शन देखनी पड़ेगी, उसका स्टेटस देखना पड़ेगा. एज कंपेयर टू दैट, एक राजा महाराजा हैं हैदराबाद के, उनके डॉटर का वेडिंग हुआ, उसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपया खर्चा किया, उनको 50 lakhs या 1 crore 50 lakhs by gift of money आया. That would be through in no seconds. But with the example we have taken for the rickshaw puller, it would be difficult because that rickshaw puller doesn't have the means. He is not supposed to be inviting people who would donate so much to him. It doesn't go well with the logic. It can happen in a given case. Somebody takes pity और उसको उसने 1 लाख रुपया डोनेट कर दिया कि भाई चल तू शादी कर ले. That could happen, but it would not match his status. तो जब भी आपसे टैक्समैन पूछेगा कि उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, अब वो मिनिमम लायबिलिटी टू टैक्स में आता है नहीं आता, दैट्स अनदर इशू. बट द पॉइंट इज, अगर वो उसमें आता है तो क्या उसको छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिकॉज इट वुड हैव टू बी सीन in comparison to whatever his status is there and whatever he spent out of it. So these two things will have to be taken as a logic, as I said earlier also, that logic also governs each of these acts and much more in the Income Tax Act. Now, coming to 224, what is income? Income will include profits and gains you might be having. आपने एक जमीन ली थी 10,000 रुपए की, 15,000 की बेचती, 5,000 रुपया प्रॉफिट हो गया. आपने ट्रेडिंग इन क्लॉथ कर रखा है, एक साड़ी लिया आपने 20,000 की, 35,000 में बेचती, 15,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया. This is called profits and gains of any business or profession or wherever. दूसरा, any salaries or any remunerations of any kind, whatever, any gratuities, any, I should say, exgracias, जितनी भी कैटेगरी में आप उसको स्प्लिट कर लेंगे, जो आपने सर्विस दी किसी एम्प्लॉयर को और उसके एवज में जो जो भी कुछ आपको मिला, all that would taken collectively to be taxable. Of course, there are exemptions. I'll come to it later. But अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम की. इनकम क्या है? इनकम इंक्लूड्स, व्हाट डज इट इंक्लूड? एज आई टोल्ड यू, देयर विल बी 20 limbs of it. One is profits and gains, the other is dividends. आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके जो गेन्स आते हैं, they too are taxable. Certain categories are exempt, but I'm not going into that detail for today's talk. It would confuse you too much. So let us understand the basic principles as. So basically, profits and gains हो गए, हमारे dividends हो गए, then हमारी जो income from partnership firms हो गई, that is income to exempt because the tax would already have been given by the partnership firm. Then annuities, then आपकी subsidies. इंडस्ट्री को बहुत सारी सब्सिडीज मिलती हैं. आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं, लेकिन आप पूरब में जाके आपको गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है, लगाइए. जहाँ बीएड है, ग्वालियर से लगे हुए एरियाज हैं, जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, वहाँ कहते हैं इंडस्ट्री आप लगाइए, हम आपको सब्सिडीज देंगे. तो वो सब्सिडीज भी आपकी बेसिकली इनकम बनेंगी, बट अगर गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई किया हुआ है इन दैट पर्टिकुलर एरिया, देन यू वुड बी थ्रू विद इट and you would not be required to pay tax on them. So likewise, there are so many categories where like corpus donations होती हैं, वो trust को exempt होती हैं, लेकिन जो voluntary donations होती हैं किसी भी trust या society को, they would be taxable, right?
Now coming to the scope of total income, section 5. स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है? किसी भी स्रोत से अर्जित की गई आय, आय क्या है मैं आपको बता चुका हूं। अब वो किसी भी स्रोत से अर्जित की गई, चाहे आपने प्रॉपर्टी बेची, चाहे आपने ज्वेलरी बेची, चाहे आपने शेयर्स खरीदे बेचे, चाहे आपने कोई बिजनेस किया, चाहे आपने दूध की डेयरी लगाई, एनीथिंग, इट कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। वो सारी सोर्स सब जगह से अर्जित की गई और उनको एक जगह जो हमने ले लिया, if it is accrued in India, it is earned in India, then it would be taxable in your hands, right? I've added two more words: accrued in India, received in India, earned in India. ये भी इसलिए जरूरी है, आपको बता दूं, सेक्शन 7 to 9 का एक झमेला है। बहुत से लोग रेजिडेंट्स इन इंडिया कहलाते हैं। आप सब लोग यहाँ रह रहे हैं, आप विदेश घूम आए 5 दिन के लिए, यू विल स्टिल बी रेजिडेंट इन इंडिया, बट आपके रिलेटिव्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, कोई भी लोग आपके बाहर चले गए, वो लोग वहां पर कंप्यूटर इंजीनियर हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं पर भी, they would gradually by and by turn to be non-residents. If out of 10 financial years, in 9 financial years, they have not been in India, they would be treated as non-residents. Right? Then, in case in the 7 years, in the past 7 years, if they have lived in India for less than 729 days, they would again be called non-residents. अब non-residents और residents में क्या फर्क है? Residents के लिए हर वो चीज जो उनकी अक्रू हो रही है इंडिया में, जो अर्न हो रही है इंडिया में, जो अराइज हो रही है इंडिया में, that would all be taxable as per the Indian Income Tax Act. लेकिन नॉन रेजिडेंट जो चीज वहां अर्न कर रहे हैं, सपोजिंगली आई टेक 2 एग्जांपल्स। पहला केस में आपका ब्रदर अर्न कर रहा है एज अ कंप्यूटर इंजीनियर इन अमेरिका, ही इज गेटिंग द मनी देयर, ही इज डूइंग द सर्विसेज देयर, एंड he is retaining that money there, not sending back, repatriating those amounts to their parents or to you, whatever. तो सब कुछ उसका वहां है, लेकिन इनकम टैक्स का पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स का, वो यहाँ का है। Would he be taxed? No, because if his status is non-resident, as I just told you, क्या status में resident, non-resident होंगे, तो उन categories में अगर वो fall करता है, non-resident होता है, तो he would not be taxed in India if the country happens to be America. Why so? Because we have a DTA with America, double tax avoidance arrangement, DTA. उसमें क्या है कि अगर हमारा कोई नेशनल वहां चला जाता है, वहां अर्न करता है, वो पैसा वहीं रिटेन होता है, वहां वो टैक्स दे देता है, he would not be taxed in India. Even if he repatriates that money back to India, he would not be taxed. He would be taxed there only, not here, and vice versa. आदमी आता है तो सिमिलर इक्वेशंस उसका अप्लाई करते हैं, उसने यहाँ टैक्स दे दिया, उनके एम्बेसीज के डिप्लोमेट्स हैं, वो सब यहाँ अर्न करते हैं, इंडियन रुपीज में अर्न करते हैं, चाहे डॉलर्स में अर्न करते हैं, उनको जो भी अमाउंट यहाँ रिसीव हो रहा है, तो एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इट शुड बी टैक्स्ड, बट दे वुड बी एग्जेम्प्टेड बिकॉज वी हैव अ डीटीए विद अमेरिका. नाउ यू टेक अ केस ऑफ हॉन्डुरास और ग्वाटेमाला, जिनके साथ हमारा डीटीए नहीं है. अब देखना ये होगा कि आपने सिटिंग इन इंडिया, आपने कोई सर्विसेज हॉन्डुरास में या ग्वाटेमाला में दी है किसी को, जिसमें अर्निंग तो वहां हुई लेकिन सर्विसेज यहां से दी गई, सो दैट वुड, बिकॉज डीटीए नहीं है, उस पर आपको डबल टैक्सेशन भी देना पड़ सकता है, क्योंकि रिसीट आपको मनी की वहां हुई, रिपैट्रिएट वो यहाँ आया, तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज करेगी. तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट डिटर्मिनिंग योर स्टेटस रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. आज ज्यादातर फैमिलीज के कोई ना कोई बाहर है, तो उनको आप लोग आ सकते हैं कि अपना टैक्स स्टेटस जरूर वेरीफाई कर लें जब आप बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जो भी स्टेटस है. और जो 729 डेज से कम पे अगर इंडिया में रहता है तो ही वो नॉन रेजिडेंट है, अदरवाइज वो रेजिडेंट कहलाएगा. So that basic difference that exists. Now coming to section 10.
Section 10 is all those incomes which are otherwise not to be taken as taxable incomes. They are, in other words, exempt incomes. For instance, the first one there is agricultural income. It is not taxed in India, but there is a liability. Supposingly, जैसे हमारे यहाँ 3 लाख तक का इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है आज की तारीख में। अब आपका 2,80,000 रुपया का इनकम है, आप मन में बनाए बैठे हैं कि मुझे टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपका 1.5 लाख रुपए का खेती की आमदनी है, तो 280 प्लस 150 would exceed 3 lakhs. Though agricultural income is otherwise said to be exempt, but उसका स्लैब रेट आ जाएगा 150 के बाद 280 जोड़ने के बाद it would be somewhere around 420, 430. तो उसमें जो स्लैब रेट लगेगा, से 15% टैक्स स्लैब का रेट लगता है, तो वो आपको 280 वाली इनकम पर आ जाएगा। यू गेट इट? एग्रीकल्चरल इनकम अदरवाइज फुल्ली, अगर किसी आदमी की केवल एग्रीकल्चर इनकम है, चाहे 1 करोड़ भी है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट फॉर रेट, if you have other incomes also, it would initially stand joint with the income, your current income. We determine the slab rate applicable to you, and then we exempt the agricultural income, thereby meaning that जो आपका remanent income है, उसके ऊपर उस slab rate. Am I clear? Now 11 to 13 is a bit complex for you at this stage. I'm not touching that. It deals with basically exempted incomes from receipts in trusts and societies. NGOs, आपने बहुत नाम सुना होगा, रोटरी इंटरनेशनल का सुना होगा, लायंस क्लब का नाम सुना होगा, ये सब लोग इन श्रेणियों में आते हैं। और क्यों इनको एग्जेम्पशन मिलती है, ये आपको बता देता हूँ। एग्जेम्पशन इसलिए मिलती है क्योंकि ये समझा जाता है कि दे आर डूइंग व्हाट द गवर्नमेंट कुड नॉट डू। हमारे बहुत सारे स्कूल रन किए जाते हैं ट्रस्ट में, सोसाइटीज में। गवर्नमेंट स्कूल्स आप देख रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए नहीं जाने जा रहे हैं आज की तारीख में, तो प्राइवेट स्कूल्स जो आ रहे हैं, दे आर डूइंग गवर्नमेंट्स जॉब। गवर्नमेंट ने इसलिए उनको एग्जेम्पशन दी है कि आप यदि हमारे यहाँ हमारा काम करते हैं तो आपको हम आमदनी में से छूट दें। द ओनली थिंग बीइंग दैट दे शुड नॉट बी लिविंग विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। Profit हो जाए in the process is another question, but our motives should not be ascertained to determine profit. यानी 40 रुपये अगर एक बच्चे की फीस ली जा सकती है और हम 70 रुपये चार्ज कर रहे हैं, डेफिनेटली वी हैव अ प्रॉफिट मोटिव समवेयर अराउंड। अभी तो बड़े कॉलेज, जैसा आपका बड़ा कॉलेज है, बड़ा सेटअप है, यूनिवर्सिटी है, उसकी सब बीटेक की और सब चीज़ों की, एमबीबीएस की, सब डिग्रीज की जो फीसेस हैं, वो सारी गवर्नमेंट ऑफ यूपी जिस भी स्टेट में है, वो स्टेट डिटरमिन करना, जो भी उनके हिसाब से। यू कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड दैट। देयरफॉर द फीस स्ट्रक्चर इज गिवन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट वेयरएवर द यूनिवर्सिटी इज पोजीशन्ड। उनको फिर ये एग्जेम्पशन देते हैं। उनके ऊपर राइडर्स हैं कि वो 85% जितनी आमदनी है, 100 रुपया है तो उसमें 85 रुपये उसी साल में टुवर्ड्स चैरिटेबल पर्पस खर्च करेंगे। यदि वो 85 नहीं करते हैं तो दे वुड बी पुट टू टैक्स। दैट एग्जेम्पशन वुड बी विड्रॉन, मीनिंग thereby you cannot make a collection of the amount and keep on building your corpus for your own use. Of course, during the process आप बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं, बहुत से लोग खरीद सकते हैं, बिकॉज आपको उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का काम करना है, आप उसको दिखा सकते हैं। वो काम मारुति 800 में भी हो सकता है, वो काम मर्सिडीज में भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू हाउ टू प्रूव दैट यूजेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट और इट्स मोटिव्स। Yes, nothing that is not in the name of the trust cannot be claim exemption for. It has to be essentially, आप यहाँ फर्दर क्लासेस बनाते हैं, फर्दर कोर्सेज एड ऑन करते हैं, उनकी फीसें देते हैं, बच्चे आए या ना आए, लेकिन फीस जाएगी उसकी, उसका जो स्टाफ है वो वहाँ रहेगा,
ऑल दो चैलेंजेस. अब कोविड के दौरान बहुत सारे बच्चों की फीस नहीं आ पाई, बट द कॉलेजेस दे हैड टू, उनका जो भी था, गवर्नमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शंस कर रखे, दे हैड टू डू दैट. So I end the section 13, 14 up to 13 with this. Now let's come to section 16, where we deal with salaried people. Salaried में जैसे मैंने बताया, remuneration आपको मिलता है. किसी भी सर्विस जो आप देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो कंपनी हो सकती है, वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो कॉलेज हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी हो सकती है, एनीवे. यदि आप कोई भी सर्विसेज अपनी देते हैं, बहुत से लोग एग्जामिनर्स आते हैं, उनको भी रेमुनरेशन देती है यूनिवर्सिटी. दैट टू इज अकिन टू सैलरी और रेमुनरेशन टेकन, एंड दैट विल बी चार्ज टू टैक्स. अब वो उस उनके स्लैब्स कितने आते हैं या नहीं आते हैं, दैट वुड ऑफ कोर्स बी अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, बट as far as the broad head is concerned, it would be taxable. Now with that come perquisites. बहुत सारे perquisites होते हैं. कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जो आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर फॉर द ड्यूरेशन दैट यू आर इन द सेटअप वो आपको देते हैं. तो वो सब चीज भी आपका परक्विजिट वैल्यू मानी जाएगी. कुछ लोग आपको स्टाफ क्वार्टर देते हैं, उसकी भी मार्केटेबल रेट एक सिस्टम है, उस सिस्टम से वैल्यू की जाएगी, वो आपका परक्विजिट वैल्यू अदर देन योर सैलरी हो गया, इट वुड बी टैक्सेबल अगेन. थर्ड इज घोड़ा गाड़ी, ड्राइवर, gardener for your home. All these things come under the capacity of perquisites, and they would all be taken to task for taxing your income. Now next, allowances. बहुत सारे रेमुनरेशन के साथ अलाउंसेस भी होते हैं. जुडिशरी के लोगों को हाउस रेंट मिलता है, HRA, वो बहुत सारे लोगों को और भी मिलता है, लेकिन मैं जुडिशरी का स्पेसिफिक एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि उसमें आपके काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. जो बच्चे जाना चाहें चले जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीच में डिस्टर्ब ना करें, अभी उठ जाएं जिसको जाना है. It is a dry subject, therefore many may not be finding it very interesting. Anyways, तो वो अलाउंसेस भी पार्शियली टैक्सेबल रहते हैं, अपनी अपनी लिमिट्स हैं रेमुनरेशन के साथ साथ, बट आई एम टॉकिंग ओनली ब्रॉडली. अब जब हम इनकम्स की बात करते हैं, वो हम सब कर चुके हैं, तो अब सवाल ये इनकम्स टैक्स कैसे होंगे. There are various heads as given in section 15. There are some 4-5 heads. One is salary. Second is profit and gains of business or profession. Third is capital gains. What is capital gain? आपने जमीन ली, उसको खरीदा बेचा, उसमें प्रॉफिट हुआ. Enhancement of value of investment is always called capital gain. It could be jewelry, it could be bullion, it could be property, it could be house, it could be agricultural land. All these issues come under the head capital gain. Then fourth is house property. मकान आपका है, आपने किराए पर दे दिया, या आपने कमर्शियल एरिया में आ गया वो मकान, आपने एक कमरा तोड़ के उसमें मेडिकल स्टोर बनवा दिया किसी का. वो मेडिकल स्टोर या तो आप खुद चला रहे हैं या किसी को रेंट पर दे रहे हैं. वो तमाम जो उनमें से जो रिसीट्स होंगी, they would all be considered taxable. All those receipts. ये सारी चीजें आती हैं. बहुत से लोग बिजनेस एसेट बनाते हैं. दिल्ली में पटपरगंज में बहुत सारे लोगों ने बिल्डिंग्स ली हुई हैं. वो बिल्डिंग बनाई फर्स्ट डे से, नॉट दो इट्स एन इन्वेस्टमेंट, बट वो बनाई कमर्शियल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. उसको बनाया, जो भी उसमें खर्चा हुआ उसको बिजनेस में डाला, और उससे जो प्राप्ति हुई वो भी बिजनेस प्रोफेशन का रिसीट और सेल हो. तो दोनों जगह डिफरेंट हो गया. इट वुड नॉट बी कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट वुड इंस्टेड बी अ बिजनेस, क्योंकि आप उसके लिए पहले से डिक्लेयर करके चले हैं कि ये हमारा बिजनेस है. रियल एस्टेट में डील करते हैं बहुत से लोग. जी,
नहीं, 10,000 में ही बेची तो तुम्हें टैक्स कहाँ आया फिर? जी 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 जी, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, उसकी इंडेक्स वैल्यू करनी पड़ेगी 10 रुपए की। वही तो मैं कह रहा हूँ, महंगाई दर इज व्हाट वी कॉल्ड इंडेक्स्ड वैल्यू। 10 रुपए की जो वैल्यू 10 साल पहले थी, वो आज उसके समकक्ष आज कितनी वैल्यू का होता महंगाई के हिसाब से? पता लगा 10 रुपए की चीज 110 रुपए की हो गई, राइट? और आज जो बिक रहा है वो 10,000 का बिक रहा है, तो 10,000 माइनस 110 वुड बी योर कैपिटल गेन, राइट? ऐसे ही आजकल भूमि अधिग्रहण का बहुत मोटा विषय चल रहा है, जगह जगह, कहीं गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, कहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है। तमाम जितने एक्सप्रेसवेज होते हैं, तो उसमें क्या होता है, गांव से या जो भी बंजर लैंड पड़ी हुई है वो ली जाती है। उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कॉम्पनसेशन आता है वो एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड दैट लैंड वाज एग्रीकल्चरल लैंड, ओनली वन कैटेगरी। अगर वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड गई है अधिग्रहण में, एक्विजिशन में, तो वो टैक्सेबल है। दिस इज द डिफरेंस। नाउ further, if you see about various heads, the other is, last is other sources. जितने आपके बैंक एफडीज हैं, इधर उधर आपने प्राइवेट लोन्स दे रखे हैं, उनके ऊपर आमदनी आई, कोई और चीज में आपने कुछ किया, उसके ऊपर आमदनी आई। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें जो फर्स्ट 4 हेड्स में नहीं आ रही, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इन चारों कैटेगरी में जो नहीं आती है, वो रेजिडुअल कैटेगरी बचती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो सब एक जगह इकट्ठी करके उसके अंदर टैक्स होता है। अब सवाल उठता है, क्यों हम अलग अलग हेड को डिस्कस करते हैं? इनकम जब आ गई तो आ गई, तो टैक्स। व्हाई डू वी टेक रिकोर्स टू वेरियस हेड्स? दैट इज द क्वेश्चन। ऐसा इसलिए करते हैं कि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, उनकी इनकम अर्निंग के जो एक स्रोत हैं, वो स्रोत अलग अलग है। जैसे कोई आदमी यहाँ इस यूनिवर्सिटी में सैलरीड पर्सन है, अब वो आएगा तो आने जाने का उसको चाहिए ना, घर से चलेगा, ट्रेन में, प्लेन में, जहाँ से भी चल के वो यहाँ आया, यहाँ पूरा दिन नौकरी किया, वापस जाएगा। दैट एक्सपेंडिचर ही नीड्स। देन ही वुड आल्सो बी ड्रेस्ड अप एप्रोप्रिएटली। जो भी वो कपड़े पहन के आए, उस कपड़े के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए, ड्राई क्लीन करने के लिए, अगेन उसको खर्चा चाहिए, क्योंकि सैलरी के साथ में कुछ नहीं मिलता है। और तो उसको गवर्नमेंट कहती है, हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन इन सब बातों के लिए देंगे, 50,000 मैक्सिमम, और सैलरी विच एवर इज लेस। तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उन्होंने दे दिया। नाउ, जैसा अभी आपने कहा था कैपिटल गेन्स के लिए, तो उसमें इंडेक्स वैल्यू दी जाती है, सैलरी का इंडेक्सेशन नहीं किया जाता है, उसको तो राइट अवे टैक्स किया जाएगा। अब आपका कैपिटल गेन का मसला है, तो उसमें कैपिटल गेन लगाने के लिए हमें जो खरीद की वैल्यू थी, उसको हम आज की वैल्यू के समकक्ष लाएंगे। पहले वो कैसे लाएंगे? जो गवर्नमेंट ईयर आफ्टर ईयर इंडेक्स वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ में, जो हमारी जीडीपी है उसके साथ में समकक्ष करके उसको हर साल डिक्लेयर करती है। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग होता है। उस बेसिस पे आप उसका इंडेक्सेशन करिए। 10 साल पहले वो 10 रुपए की खरीदी थी, तो आज के समकक्ष उसकी वैल्यू कितनी नहीं होगी। अब उससे जो ज्यादा आपको मिला, दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। जी नहीं, जीरो नहीं होगा ना, मैंने आपको बताया कि 10 रुपए की आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, तो वैल्यू की उसकी इंडेक्स कॉस्ट 110 हुई ना। अगर हुआ तो नहीं लाएगा, अगर हुआ तो, लेकिन वो वैल्यू जो इंडेक्स वैल्यू है वो ही चलेगी, तभी कटेगा। क्लियर? जी, वो है रेवेन्यू रेट। दो चीज होती हैं जिसको कहते हैं लगान। आप बात कर रहे हैं लगान की। लगान इज अ टैक्स पुट ऑन द
agricultural land by the state government for utilizing the land's resources. खनिज है उसका, उसमें आप उत्पादन कर रहे हैं, जमीन से पानी निकाल के उसकी बुआई में सहायता कर रहे हैं. All those things they get accounted for through the payment of those taxes on the land. That is called revenue tax. उसका इंतजाम करते हैं पटवारी और तहसीलदार होगा. वो सब एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टेट का अलग होता है, वो डील करता है. It has nothing to do with income tax. Now, next is what to do about profits and gains of business or profession. बताइए कोई कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशन में कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ जी, what kind of expenses? Very well said. Now there are two kinds of expenses there. One are direct. आपने सैलरीज दी, लेबर को पेमेंट्स दिए, रॉ मटेरियल खरीदा, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस. कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन. मशीनरी आपने लगाई, वो आज आपने 10 लाख की खरीदी, मार्च में खरीदी, अप्रैल में आप उसकी वैल्यू अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली 10 लाख नहीं रहेगी, उसकी चाहे 10 रुपए घटे लेकिन वैल्यू घटेगी. दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. ईयर आफ्टर ईयर इट गोज डाउन इन अ कास्केडिंग इफेक्ट. वो चलता रहता है. 4 साल का हो गया तो 4 साल का स्प्लिट लाइन मेथड होता है या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, वो अलग अलग टेक्निकल चीजें हैं, मैं नहीं जा रहा हूं मैं, उनके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है. तो ऑल दोज थिंग्स दैट गेट and accounted for and therefore deducted from the incomes, and then the final or the gross total income emerges. उसके ऊपर आप टैक्सेशन की बात करें. अब आप देखिए जितने अदर हेड्स हैं, कैपिटल गेन्स में नहीं ऐसा कुछ हो रहा है, सैलरीज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अदर सोर्सेज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, केवल बिजनेस और प्रोफेशन में ऐसा है जहां पर आपको डेप्रिसिएशन भी मिल रहा है. फिर इंडस्ट्री यदि आप लगाते हैं, जैसे यूपी के पूर्व एरिया में लगाते हैं, ईस्टर्न यूपी में लगाते हैं, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे रखी हैं, तो उस पर गवर्नमेंट और एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको देता है कि आपका 3 साल का मोरेटोरियम दे दिया, आपको जीएसटी माफ है, टैक्स माफ है, इनकम टैक्स माफ है, ये सब चीजें भी होती हैं. लेकिन ये कब हैं? जब आप प्रॉफिट्स फ्रॉम गेन्स ऑफ बिजनेस में ऐड कर रहे हैं, नॉट अदरवाइज. अब एक और यूनिवर्सिटी सपोजिंगली जौनपुर में है, हमारे एक प्रोफेसर यहां से वहां शिफ्ट हो जाते हैं फॉर वट एवर रीजंस. विल ही गेट एग्जेम्पशन? जो पेमेंट उनको यहाँ था वही पेमेंट उनको वहां भी मिल रहा है, या और समझिए 10 रुपए ज्यादा मिल रहा है. विल ही गेट एनी काइंड ऑफ एग्जेम्पशन देयर बिकॉज इट इज इन ईस्ट यूपी? नो, बिकॉज these infringements are considered only within the head of business and profession. That is why the need is to take care of various incomes under various heads. हाँ जी, लास्ट रो में बताएंगे आप, मैंने कौन कौन से हेड्स के बारे में बात की अभी? The last man there. खड़े होइए, बताइए अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? है जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हम आधे घंटे पहले बात कर रहे थे. अभी क्या का बात कर रहे थे? हेड्स ऑफ इनकम की. है जी, कितने हेड्स ऑफ इनकम हैं? नींद आ गई थी? है जी, why should you be bothered about them? आप क्लास में हैं, there is no fun going on here. बैठिए, दोबारा से बताता हूँ के लिए. We were discussing the various heads of income, इनमें इनकम टैक्सेबल होती है. आया आपको समझ में? कौन कौन से हेड्स होते हैं, क्यों उसमें इनकम दी जाती है? दिस वाज आवर टॉपिक. उसमें मैंने बताया सैलरीड, then income from house property, then profits and gains from business or profession, then capital gains, and lastly other sources.
जितने भी ऊपर के चारों सोर्सेज में इनकम, तो वो अदर सोर्सेज में डाल के उसमें टैक्स करेंगे। क्यों करेंगे अलग अलग हेड्स में? क्योंकि अलग अलग हेड्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। आपकी जो बिजनेस का स्रोत है या जो सैलरी का स्रोत है, वो जैसे जैसे स्रोत है, जिस जिस तरह की इनकम्स हैं, उस हिसाब से हम उसको टेकअप करेंगे। क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए अभी, और किसी को समझ नहीं आया हो तो बताइए। Now we move to the next setup, and that is how incomes would be worked out for business people. सैलरीड मोटा मोटी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। कैपिटल गेन्स आपके एग्जाम्पल से लगभग सब क्लियर हो गया। अदर सोर्सेज अपने आप में क्लियर है कि जो कहीं नहीं आएगा वो आ जाए। हाउस प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ कम्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। व्हाट कुड बी अ प्रोफेशन? कोई बताएगा? हेड है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस तो आप सब समझ गए। नाउ व्हाट कैन बी प्रोफेशन? यस, वेरी राइट। हमारी जो पर्सनल स्किल्स हैं जिनको हम डेवलप करते हैं, अब मैं वकालत करता हूं, मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है जिसको मैं बेचूंगा। Whatever I earn is courtesy this head given by God to me, right? These and such other activities are all considered as profession. Now there could be some child prodigies, God gifted बच्चे पैदा होते हैं बहुत सारे। कोई मिमिक्री करता है, कोई टीवी आर्टिस्ट बनता है, कुछ कुछ बनता है। आप देखते हैं छोटे छोटे एजेस के बच्चे आगे आते हैं, वो सब भी इसी हेड में, प्रोफेशन के हेड में अकाउंट फॉर होते हैं। देयर आर चिल्ड्रन आई एम अवेयर ऑफ जिनका टैक्सेशन हमारे आप से भी बहुत ज्यादा लेवल पे होता है, क्योंकि वो अपनी ग्रंथियों से, अपने माइंड से, अपने टैलेंट से, गॉड गिवन टैलेंट से वो इनकम अर्जित कर रहे हैं, राइट? So that would fall in the capacity of profession. प्रोफेशन और बिजनेस आसपास नहीं है, दोनों में बहुत मतभेद है, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को एक ही हेड में डाला गया है। अब बात करते हैं हम बिजनेस की। हाउ इनकम्स वुड बी कैलकुलेटेड इन बिजनेस। मैडम बहुत बात करती थी एक्सपेंडिचर की। अब बताइए क्या क्या खर्चा आप घटाना चाहती हैं? लेट्स कम टू जी। एक्सपेंसेस में भी दो कैटेगरीज हैं। I'll just take 2-3 more minutes. I think it's already an hour, so I'll just wind up. बिजनेस के जब हम खर्चों की बात करते हैं तो दो तरीके के खर्चे होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उसको कहते हैं, जैसे हमने नई मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, उसका खर्चा हमारे को इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा, वो 10 लाख कैपिटलाइज कर दिए जाएंगे और उस कैपिटलाइजेशन की बदौलत वो हमारे को डेप्रिसिएशन उस पर मिलता रहेगा ईयर आफ्टर ईयर, राइट? अब बात है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। आपने एक ट्रक लिया, ट्रांसपोर्टर हैं आप, तो उसका जो ट्रक है उसकी खरीदने की, मान लीजिए 20 लाख रुपए का एक ट्रक आता है, और 20 लाख रुपए की वैल्यू आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी, आपके एसेट्स में खड़ा हो जाएगा और उस पर ईयर आफ्टर ईयर आपको डेप्रिसिएशन मिलता चलेगा। लेकिन आपका ट्रक माल लेके कहीं जा रहा था, रास्ते में उसका टायर फट गया, उसका टायर रिप्लेस करना पड़ा देयर एंड देयर, नए ट्रक का वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दैट वुड बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर chargeable to your profit and loss account in that particular year, because that tire may or may not exist permanently.
it would be maintenance. ये बड़ा एक डाइसी इशू है, बहुत सारे किसी बड़े थिन लाइन ऑफ डिफरेंस पर एग्जिस्ट करते हैं ये सब चीजें कि कौन सा खर्चा रेवेन्यू कहलाएगा, कौन सा खर्चा आपका कैपिटलाइज किया जाएगा. बट आई एम जस्ट गिविंग यू सिंगल एग्जांपल अबाउट इट. तो उसकी वजह से आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा टैक्सेशन कैसे चलेगा. क्योंकि आपकी इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपए है, उसमें से 4,000 रुपए का आपको ये आ गया है, टायर आ गया, तो आपकी इनकम 96,000 रह जाएगी, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू अदर एक्सपेंडिचर और व्हाटएवर. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये फर्क होता है. जी हाँ, मिसयूज हो सकता है, बट देन उसके वाउचर्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, और यदि वो वाउचर्स फर्जी पाए गए, असेसमेंट ऑफिसर ने देखा कि वाउचर इन्होंने दिए हैं, अब वो वहां से इंक्वायरी की उसने और वो फर्जी पाया गया, तो देन द पर्सन कैन गो टू जेल ऑल्सो. इट इज नॉट सो इजी कि आपने कर लिया और थोड़ा टैक्स बचाने के लिए ऐसा कर लिया, लोग करते हैं फिर भी. इट इज देयर. वेल स्टूडेंट्स एंड एवरीबडी हियर, आई वुड लाइक टू वाइंड अप नाउ बिकॉज आई थिंक काफी ड्राई टॉपिक में स्टूडेंट्स ने बहुत ध्यान से सुना और कुछ लोग बोर होकर चले भी गए. So I won't want to take much of your time. जी 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 जी. मैं बता देता हूँ. ऐसा है, पिछले 4 साल से अब फेसलेस स्कीम इन प्रोसेस है. आप ऑनलाइन अपना रिटर्न भरते हैं, वो ऑनलाइन दिल्ली सीपीसी से प्रोसेस होके चला जाता है बेंगलोर सीपीसी में. वहाँ इन्फोसिस से इनकम टैक्स एक्ट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है. इन्फोसिस के बंदों को ट्रेनिंग दी हुई है, वो वहाँ बैठे हुए हैं और इमीडिएटली वो एक्ट के हिसाब से प्रोसेस किया जाता है. अगर आपकी डिमांड निकलती है तो आपके मेल पे वो आ जाएगा कि इतना डिमांड आपका बनता है, ये आपका इनकम कंप्यूटेशन है. अगर रिफंड बनता है तो रिफंड आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आएगा. दिस इज हाउ इट इज टू. ऑटोमेटिक है सब प्रोसेस. नहीं, अब कुछ नहीं, दैट इज गॉन आर द डेज. अब तो कई बार तो तीसरे दिन या 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपका रिफंड आपके अकाउंट में पहुंच जाता. एनी मोर क्वेश्चंस? जी अकाउंट में क्रेडिट उसी संस्था से दोबारा अमाउंट क्रेडिट होता है, बट नॉट मेंशन्ड इन दिस सैलरी. सो इट्स बोथ आर कम्युनिटी मिलकर ही वो सैलरी प्रॉपर मेंशन होगा या वो अलग? ऐसा होता है, उसकी व्यवस्था एक फॉर्म 16 एस में होती है. जो आपका एम्प्लॉयर है वो एक तरफ आपको सैलरी देगा, दूसरी तरफ उसका क्रेडिट आपके नाम के फॉर्म 16 में ऑटोमेटिकली करेगा. तभी अगर वो नहीं करता है तो उसको भी आपके दी गई सैलरी पर छूट नहीं मिलेगी. तो इसलिए वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है दोनों तरफ से. जैसे ही आपके नाम में आ जाएगा तो डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा इनकी ये सैलरीज आई हैं या नहीं आई हैं, व्हाटएवर इज द नेचर ऑफ सोर्स, वो उस सेक्शन में अपने आप जाके सेटल हो जाए. एनी मोर क्वेश्चंस? यस. रीजनेबिलिटी, जैसे मैंने आपको गिफ्ट के टाइम पे बताया था कि एक रिक्शा पुलर का 3,000 रुपये में उसने शादी कर दी तो वो 1.5 लाख रुपया नहीं बताएगा. ऐसे ही हर चीज के समकक्ष, अब टायर है ट्रक का, आप 4,000 का ला सकती हैं, मैं 25,000 का लाया. इट कुड बी फ्रॉम अ फॉरेन ब्रांड, बट माई क्वेश्चनेबिलिटी वुड बी देयर कि आप 4,000 की जगह 25,000 का क्यों लाए. एंड इफ द असेसमेंट ऑफिसर डजंट फाइंड माई एक्सप्लेनेशन ऑन दैट 25,000 वाला टायर टू बी सेटिस्फैक्टरी, he can disallow part of it. एक्सपेंस पे डायरेक्ट टैक्स नहीं है, उसके डिसअलाउंस पर, उसके डिसअलाउंस पर. सपोजिंगली 1 लाख में से 4,000 का आपने टायर घटाया, 96 बचे. मैंने 1 लाख का 25 घटाया तो 75,000 की इनकम बची. तो अब जब वो डिसअलाउ करेंगे तो मेरी इनकम मान लीजिए 10,000 उन्होंने घटाया तो बाकी 15,000 जुड़ गया ना मेरी इनकम में. आई कम टू टैक्सेबल इनकम ऑफ 90,000 नाउ. तो एक्सपेंसेस एज सच आर नॉट टैक्स्ड, दे आर डिसअलाउड. Thank you.
Thank you so much, sir. Now, I would like request a man of deep commitment, humbleness, and passion, an outstanding academician, a man of ethics and values, our guide, Honorable Vice Chancellor Dr. Amarveer Garg, sir, to bless all by words of wisdom. Thank you very much and very good afternoon to all. You have already heard a wonderful discussion and the presentation on income tax. But still, I would like to add only few things. The business and profession. There are some professions in the business where the government says that this is your, they give that you come in the business of the 20 lakhs or 50 lakhs or 1 crore, and they need not to give the detailed account, and they will be given the fixed income or fixed income tax. It is the most important source of the tax evasion. For example, the doctors or advocates, they are given the blank system that 40% of your income or 35% or 50% of your income is considered as exemption, as like a profession. So these are the sources of the corruption. These are the sources of the tax evasion. No, okay. Let me say that. Suppose the businessman says कि मेरी sales जो है 20 lakhs है, तो आप उससे जीएसटी की हर एक पूरे स्टेटमेंट नहीं मांगते, और आप उससे कहते हैं कि 20 lakhs है, इस पे आप इतने 1000 रुपीस आप टैक्स दे दीजिए. Is it true or not? Is it true or not? मैं वही बात कर रहा हूँ. न, मैंने कहा कि अभी मैं बिजनेस करता हूँ, छोटा बिजनेसमैन हूँ, मेरी इनकम जो है, मेरी सेल जो है पूरी साल में 20 लाख रुपए. जीएसटी में हर कस्टमर से लेता हूँ, 18% ले रहा हूँ जीएसटी, लेकिन मुझे रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है और मैं एक फिक्स अमाउंट जो है साल में दे दूंगा. इज इट ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू टू माय नॉलेज. लेट मी करेक्ट इफ इट इज नॉट ट्रू. देयर आर बिजनेसमैन, क्योंकि उनको फिक्स होता है कि भाई उनको पूरा डिटेल एक्सपेंडिचर का रखने की जरूरत नहीं है. नहीं, उनको पूरा डिटेल जो कस्टमर से उनको बिल काटने की जरूरत ही नहीं है. नहीं, अब मैं सामान लेके जाता हूँ, मार्केट से लेता हूँ, जनरल ग्रोसरी शॉप से ले रहा हूँ, कौन बिल काटता है? कोई नहीं काटता. तो जीएसटी का पूरा स्टेटमेंट रखने की जरूरत ही नहीं है. वो उतना ही खाता है ना. मतलब यही एक कुछ सोर्सेज है जो ये करप्शन के सोर्सेज है. और जो टैक्स इवेजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और टैक्स इवेजन की जो वेन्यूज है वो सरकार नहीं बना रहे. टैक्स इवेजन के जो एवेन्यूज हैं, उसके जो सिस्टम है, वो सरकार नहीं लीगलाइज कर रहे. जो मैं समझता हूँ जो जीएसटी है, हो सकता है कि भाई आप इनकम टैक्स के लॉयर हैं, एक्सपर्ट है, यू विल बी, बट एज ए नॉर्मल मैन कि आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, छोटी जो दुकानें हैं, वो हम पढ़ते रहते हैं कि जितने भी आपके बिजनेसमैन है कि सारे कहाँ टैक्स की पूरी सिस्टम रखते हैं कि इतनी अर्निंग हुई और इतनी मेरा एक्सपेंडिचर हुआ. नोबडी कीप्स द अकाउंट. नहीं, जीएसटी तो फिर भी लेता है वो. भाई आप दुकान पे जब सामान लेते हो तो जो आपका टूथपेस्ट है, ब्रश है, जो भी चीज ले रहे हो उसमें तो जीएसटी इंक्लूडिंग है ना. टैक्स जो कॉस्ट है, तो कॉस्ट तो वो कॉस्ट पे ही ले रहा है आपसे. वो आपसे तो जीएसटी चार्ज कर रहा है, बट उसका ना अकाउंट रख करके उसको सरकार को पेमेंट नहीं करता. दैट इज ए टैक्स इवेजन. सिमिलरली डॉक्टर से मान लीजिए, उनको भी प्रोफेशनल कहा जाता है कि सब आपको पूरा सिस्टम सब चीज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. 30%, 35% डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम.
इनकम स्लैब, इतना आपका जो है उन्होंने लगा दिया, तो फिर आपको हर चीज का बिल रखने की जरूरत नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें जो हैं, हाँ, ये जो सिस्टम गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, गवर्नमेंट के बनाए हुए सिस्टम ही जो है, उसी का लूप होल्स इतनी है सिस्टम के अंदर, सारे सिस्टम के अंदर। आप पूरे का पूरा लॉ देख लीजिए। जैसे डॉक्टर सिंगल ने बताया, सिंगल साहब ने बताया कि भाई 5,000 से ज्यादा अमेंडमेंट है इनकम टैक्स के अंदर। हमारी कोई इनकम पॉलिसी नहीं है। वी हैव नो इनकम टैक्स पॉलिसी which can be used for 10 years or 20 years or 5 years even. Every year we change. तो उससे क्या है कि जो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी कैन नॉट प्लान हिज एक्सपेंडिचर एंड कैन नॉट प्लान हिज लाइफ। नॉर्मल आदमी को अपनी प्लानिंग करने में ही आसानी नहीं होती, पर्टिकुलरली जो सैलरीड पीपल, क्योंकि सैलरीड पीपल को यही पता नहीं होता भाई नेक्स्ट ईयर टैक्सेशन सिस्टम क्या है। बहुत सारी चीजें, कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंसी का नियम अपना अलग है उसमें। तो अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड है टैक्सेशन सिस्टम कि एक नॉर्मल आदमी के लिए समझ पाना ही, जैसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की मैं बात कर रहा था पहले। क्या मान लीजिए आपने 1960 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, 1970 में खरीदी, अब 70 में तो रेट कुछ और था। अब आप कह दिए कि सर जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स गवर्नमेंट ने जो है 2000 के बाद से अब लगानी शुरू कर दी, 2000 से पहले ही कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सारी खत्म कर दी, और जो 2000 का सर्किल रेट था वहां का, उसको उन्होंने आपकी वैल्यू मान ली। अब आप सर्किल रेट पता करने जाइए, कचहरी में कोई सर्किल रेट 2000 का आपको बताएगा नहीं कि इस एरिया की सर्किल रेट 2000 में क्या था। तो सिस्टम ऐसे हैं बहुत सारी चीजें कि स्टिल नियम होने के बावजूद भी जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं कॉमन मैन के लिए, उसकी वजह से स्टिल देयर इज ए लॉट ऑफ टैक्स इवेजन। I do agree that the many of these things they have become simplified. मैं 1975 से टैक्स दे रहा हूँ, from the very first day of my salary. I'm the taxpayer. और ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहा हूँ पूरा, जितनी सैलरी मिलती है कोई सेविंग नहीं करता हूँ। खाली 1.5 लाख रुपए की जो पीपीएफ वाली है, उसके अलावा मैं कोई और सैलरी नहीं पे कर, कोई और टैक्स एग्जम्पशन नहीं लेता, ना मैं कोई और सेविंग करता। जितना टैक्स है वो पूरा पेमेंट कर। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि देयर आर सेवरल थिंग्स कि जो कॉम्प्लिकेशंस फिर भी क्रिएट, इतनी सारी चीजें कि आपकी जितनी इनकम है उसका 10% तक आप कहीं दान में दिखा दीजिए, वहां से आप रसीद ले लीजिए टैक्स। तो अभी भी सिस्टम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा आप सिंगल साहब ने पहले ही बताया कि 5,000 से ज्यादा अमेंडमेंट है। मेरे ख्याल से अगर हम किसी वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज से अभी भी हमारा टैक्स सिस्टम जो है, सरकार भले ही कहती है कि सिंप्लीफाइड है, एवरीडे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नहीं, एवरीडे एक कॉमन मैन के लिए इट इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, नॉट सिंप्लीफाइड। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरीके से छात्र छात्राओं की क्वेरीज दी, और मैं छात्र छात्राओं को एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग इंटरेक्टिव बनिए। जो भी आपको ये लेक्चर था, आपका टॉपिक था, आपको पता था, टॉपिक पढ़ के आएंगे। जब तक आप उस टॉपिक को पढ़ के नहीं आएंगे, समझ करके नहीं आएंगे, अपने क्वेरीज क्वेश्चंस बना के नहीं लाएंगे, क्योंकि दिस इज योर लास्ट स्टेज व्हेन यू कैन क्लैरिफाई द थिंग्स। मैं तो आज भी, आप देखते हो कि आज भी मैंने कह दिया, जैसे भाई जो मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी में ये है कि 20 लाख रुपए मान लो किसी एक बिजनेसमैन की इनकम है, वो कहता है, तो उसको फिक्स एक चीजें हैं और उसको सारा स्टेटमेंट और सारा अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। एंड ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इशू ए रसीद। वो कह देगा मत लीजिए, जरूरत नहीं है, आप कर लीजिए, शिकायत करते रहिए, वो कह देगा साहब इसकी फिक्स है, इतना ही करता है हमने इसके। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको समझना चाहिए और जिनको आपको देखना चाहिए। नाउ आई वुड लाइक टू क्लोज माय वर्ड्स एंड थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल दैट द expert came, and it is a very good system what
Mr. Goyal has started as a series, and maybe that I would like to now give the one of the tasks to the management department, that the trade in the Indian rupee. No, now because why only the law department should take the responsibility? Why not the management? Now I would like to give a topic to the Dr. Rajul Datta, that now you know that to enhance the value of to strengthen the Indian rupee, the government of India has started a trade in Indian rupee with 18 countries. I think that we have entered the system, and which is also very important for all management students to know. So I hope that within a week, Doctor, because after the week, the value of this topic will be finished. I tell you, for a management student, the value of any topic is only for 1 week. After 1 week, that topic it becomes of the importance of the common man like me. So if it is important, it will be only for 1 week, because now I think that the 18 countries they have, and India is having a negotiation with 35 countries. So what will be its impact on the trade, whether it will reduce the export and import, and how it will be able to enhance the value of the rupee. So I hope that you will come, and then the digital rupee also. These are the two topics which I would like that the management department should take a lead, and the agriculture department will also join with this, because these are the two very important things which every student should know: digital rupee transactions and this trade in Indian rupee, or the internationalization of the Indian. You can take this. So thank you very much, and thanks to Singhal Saab, and thanks to Goyal Saab, and thanks to all deans, directors, and all students who are here. मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले आते ही इनसे पूछा था। मैंने कह दिया ना कि गवर्नमेंट इंडिया के पास कोई पॉलिसी नहीं है, टैक्स पॉलिसी नहीं है। फिर जैसे लास्ट टाइम हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, डू वी हैव एनी नेशनल रिसर्च पॉलिसी? नो, वी डोंट हैव इवन नेशनल रिसर्च पॉलिसी। नेशनल रिसर्च पॉलिसी है कोई हमारी? कोई नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्टिल दे नीड टू बी कंसीडर्ड, और एंड यूनिवर्सिटीज आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. So thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. This marks the end of this informative eye-awakening and awareness session. But nothing ends without a vote of thanks. Now I request a man with utmost simplicity, a man with an exceptional intellect, respected Professor Dr. Raju Dutt, sir, Director, SPS, School of Business Studies, vote of thanks on the behalf of our Shobhit sir. Good afternoon, everybody. Today, I feel incredibly honored and privileged to extend a vote of thanks on this occasion on behalf of School of Law and Constitutional Studies. I would like to thank our honorable expert speaker, Mr. Rajiv Singhal, for taking his precious time out and consenting to be the expert speaker. So indeed, your words have been inspired as students. I also thank our honorable Vice Chancellor, Professor Amar Garg, who graced us with his presence and his guidance. Thank you so much. I also thank our honorable Pro Vice Chancellor, sir, for his presence in the occasion. We are fortunate to be assisted by Mr. P.K. Goyal, Director, School of Law and Constitutional Studies. So you have been a constant support and you have given a lot of encouragement. Thank you so much. I would like
I would like to thank all deans, directors, and HODs for sparing their valuable time for this event. I also thank all faculty and staff members. Last but not the least, I thank all the students for showing their keen interest in the program. I once again thank you everyone for making this event successful. Thank you so much. Thank you all.